हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस बजट 2026। तो बजट में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन से सेक्टर चले, कौन सी थीम है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। उससे पहले माई सेल्फ ललित मुंद्रा, a chartered accountant and a SEBI registered research analyst, we will discuss the following themes: the sectors which will benefit, the themes which have came out from budget 2026 highlights, the numbers allocation to different sectors, the direct tax proposals and what will be the effect on the stock markets. तो आइए समझते हैं सब चीज डिटेल्स में। So friends, budget highlights is as under. So it's a data-driven overview of fiscal roadmap, sector impacts, capital allocation, direct tax reforms, and market outlook. We will discuss everything. So it's a 53.4 lakh 7 crore total budget size, 4.3 fiscal deficit, 12.2 lakh crore capex has been announced, and 10% nominal GDP growth. So we will discuss the fiscal, the charts, the allocation, the sectors, the market, the direct taxes, and the themes. So the number that matters, 53.47 lakh crore, like a 5.6% nominal increase, 4.3% of GDP, the fiscal deficit from 4.4%, which is steady. Capex has been increased by 10%. So government focus is again on the growth side. Total net market bond is 11.7 lakh crore, which is marginally high from last year. Disinvestment tariff of 80,000 crore, which is much higher. So this is not highlighted as of now across social media, I guess, from 33,000 crore to 80,000 crore, and the state devolution is 1.4 lakh crore. Now trends over time. See, fiscal deficit from financial year 18 to 27, it's been decreased. It's very good. Capex versus revenue expenditure is maintained. Net market borrowing is increased, and tax revenue breakdown is like corporate tax, the highest, the income tax, then a revenue of GST, excise, customs. So this is a tax revenue breakdown for financial year 26-27, and this is net market borrowing. Now, where does this rupee go? लाइक जो गवर्नमेंट ला रही है वो कहाँ जा रहा है? तो वो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, फिनांस कमीशन, डिफेंस, सेंट्रल में, अदर्स में, स्टेट शेयर, सेंट्रल सेक्टर शेयर्स, मेजर सब्सिडीज और सिविल पेंशन में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री वाइज इम्पैक्ट क्या होगा ऑफ एवरीथिंग डिस्कस इन द बजट यस्टरडे। सो डिफेंस में एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज, इज द हाईएस्ट, 7.8 ट्रिलियन हो गया, इट्स 15% अप, सो इट्स अ पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। एयरक्राफ्ट पार्ट में ड्यूटी एग्जाम्प्ट हुए बहुत सारे में। आईटी सर्विसेज में यूनिफॉर्म सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5%, टैक्स हॉलीडे फॉर डेटा सेंटर टिल 2047, higher threshold to $20 billion. So it's a positive for IT and IT services, GCC centers. फार्मा में इन्होंने बायोस फार्मा शक्ति बोले 10,000 करोड़ रुपया फॉर 5 years एलोकेशन किया है। 17 कैंसर्स ड्रग्स आर मेड ड्यूटी फ्री। मेडिकल टूरिज्म हब विल बी डेवलप्ड, सो इट्स अ पॉजिटिव फॉर फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर, they have doubled their budget to 40,000 crore allocation. Non-renewal of PLI for smartphone, large scale electronic, EMS service sector के लिए भी। तो semiconductor EMS is also positive since capex increase हो गया to 12.2 lakh crore. So it's a win-win situation for the infra, all sectors, building materials, corporate bonds, derivative on corporate bonds, and total redemption boost liquidity and debt. रियल एस्टेट जो REIT है तो उसे CPSE एसेट मोनेटाइजेशन हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड प्रपोज किया गया है, विच इज पॉजिटिव फॉर REIT। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल प्रो इक्विटी लिमिट रेज टू 5%, 5 from 5 to 10%, aggregate cap to 24%, सो इंक्रीमेंटल इनफ्लो हो जाए, विच इज पॉजिटिव। रेयर अर्थ के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर अनाउंसमेंट हुआ है इन उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। फुल BCT एग्जामिशन मिलेगा फॉर इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ इंपोर्ट, सो पॉजिटिव फॉर रेयर अर्थ एंड माइनिंग टू। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिशन मोड में है, सो टूरिज्म को भी एक बूस्ट दिया है। टेक्सटाइल में मेगा टेक्सटाइल पार्क हैज बीन अनाउंस्ड।
ठीक है, तो अभी नेशनल फाइबर स्कीम, मैनमेड इंडस्ट्रियल फाइबर अप स्किल में बहुत फोकस करे गवर्नमेंट, सो आ होप फॉर टेक्सटाइल हैज अगेन जिंदा हो गई है, चलो टेक्सटाइल में रिवाइव हो सकता है। नाउ सम न्यूट्रल सेक्टर, तो ये सब पॉजिटिव थे। न्यूट्रल में एनर्जी, पावर, रेलवेज, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए रेलवेज में। इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, सिंस कैपेक्स इज हाई, कंजम्पशन, सिंस इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, so it's a neutral for them. Negative कहाँ क्या है? कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में बिग नेगेटिव ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एसटीटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉवरेन गोल्ड फंड, जो अपने एसजीबी खरीद रहे थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें अब कैपिटल गेन एग्जामिशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, सो अगेन आ नेगेटिव फॉर देम। अर्बन हाउसिंग जो एलोकेशन है, इट फेल्ड फ्रॉम 45% YoY फॉर कंटिन्यू सेकेंड ईयर, तो ये भी एक वीक है। मिक्स किस केस के लिए? इक्विटी बाईबैक टैक्स अब कैपिटल गेन टैक्स हो गया, तो अभी थोड़ा अच्छा हुआ ये, जो पहले नहीं था। पीएसयू बैंक के लिए मिक्स है, बिकॉज जो हाई लेवल बैंक कमेटी वो मर्जर के लिए बोल रही है। पीएफसी आरईसी रिस्ट्रक्चर प्लांट, नेगेटिव फॉर पीएसयू बैंक एंड पॉजिटिव फॉर जनरल इंश्योरेंस है। ऑटोमोबाइल, पीएलआई फॉर ओईएम्स एट 6,000 crore ओनली, बट सेट टू एंड FY 27, तो ऑटोमोबाइल्स में पीएलआई खत्म होने वाली है, सो नॉट अ गुड साइन फॉर देम। एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स 100 crore इंसेंटिव, सो इट डजेंट मैटर मच। सो ये सब सेक्टर के लिए मिक्स्ड है, ये सब के लिए नेगेटिव और वो सब के लिए पॉजिटिव है। नाउ कमिंग टू मार्केट, दिस स्लाइड हैज बीन टेकन फ्रॉम रिसर्च हाउस, सम आदित्य बिरला रिसर्च हाउस रिपोर्ट, इट्स वेरी गुड। तो इसमें बता रहा है बजट के 7 दिन बाद, 30 दिन बाद, 90 दिन बाद, 180 डेज बाद, 365 डेज बाद क्या क्या होता है। तो इट्स लास्ट फ्रॉम 2014 to 26, you can see the rise after 30 days, after 90 days, after 180 days, and 365 days. So almost एक साल बाद सब में पॉजिटिव रिटर्न ही दिखा है ऑन निफ्टी। लेट्स सी व्हाट हैपन दिस टाइम। सो हिस्टोरिकल एवरेज 2% राइज होता है 7 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर -0.54, 90 days 1.18%, 180 days 6.7, and on an average after 1 year it's 10.17% in nifty terms. Now tax reforms, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या क्या हुआ है। ओवरसीज टूर में फ्रॉम 5% 2% टीसीएस आ गया है। कंसील्ड इनकम में 30% से 14% कर दिया है। अपील इफेक्ट हो, यानी अपील अगेंस्ट योर केसेस, तो 10% से 20% मिनिमम रिक्वायरमेंट हो डिपॉजिट का। और फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर विंडो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फॉर 6 months। नाउ लेट्स सी क्या क्या हो रहा है। पहले रिवाइज रिटर्न कुड बी फाइल्ड ओनली अप टू 31 दिसंबर, नाउ एक्सटेंडेड टू 31 मार्च। अर्लियर डेडलाइन फॉर ITR 3, लाइक जो बिजनेस प्रोफेशन में नॉन ऑडिट वाले उनकी 31 जुलाई थी, इट्स नाउ एक्सटेंडेड टू 31 अगस्त। नो चेंज फॉर ITR फाइलिंग फॉर अ सैलरीड और इंडिविजुअल्स हु वर फाइलिंग ITR 1 and 2। फॉर्म 15G 15H कैन नाउ बी सबमिटेड वंस टू डिपॉजिटरी, जो ऑटोमेटिकली विल बी शेयर विद एवरी रिलेवेंट कंपनीज, तो हर जगह आपको अब शेयर करने की दरकार नहीं है। लोअर TCS, पहले था टूर पार्टी 20%, which have been reduced to 2%. TCS on education was 20% above 10 lakh, which has been reduced to 2%. So it's a very good welcome sign for the tour operators. Now the biggest issue, STT, which was across social media कि STT कम होगा. We were the only channel who told the STT will be increased in budget. The reason is very simple. Government want to dampen the speculation, that they were thinking बहुत speculation हो रहा है, इसको कैसे कम करें, so they will increase STT in futures by 0.02 to 0.05, option premium is 0.1 to 0.15%, which is very high, and this will be negative for all the stock exchanges, brokers. Okay, maybe it will be government thinks it will be a positive sign for the longer term. इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल बस टैक्सेबल इनकम होता था, अब वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है। टैक्स रेट ऑन कंसील्ड इनकम 60% था, जो रिड्यूस करके 30% हो गया। एंड मैन पावर सर्विसेज विल नाउ अट्रैक्ट TDS अंडर सेक्शन 194C। अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन अ 6 month विंडो फॉर स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल, टेक एम्प्लॉयज, relocated NRIs and others to voluntarily disclose all these undisclosed foreign assets. Foreign asset can be crypto also. Please remember, अगर आप करते हो तो फॉरेन इनकम एसेट अप टू 1 crore, पे 30% टैक्स प्लस 30% एडिशनल टैक्स, फुल इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड फुल इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन।
इनकम डिस्क्लोज्ड और एसेट नॉट डिस्क्लोज्ड, अगर इसमें आप आते हो तो पे ओनली 1 लाख फीस, फुल इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड फुल इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. सो दोज हु हैव गॉट फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया तो आपके इसमें टू चांस मिल रहा है. एंड नो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी ड्यूरिंग अपील बिफोर CITA, प्री डिपॉजिट कट रिड्यूस फ्रॉम 20% to 10%, अपडेटेड रिटर्न्स, और ये सब कुछ इन्होंने लाया है. कोऑपरेटिव रिलीज सोसाइटी, not much changes done. IT sector and transfer pricing. So all clubbed under a single IT services category with a uniform rate of 15.5%, जो पहले 75% तक जा रहा था. So that's the reason you will see a good sign in coming days in IT stocks, जो थोड़ा सा चलने चाहिए because of this reason. And also 2047 तक data center को exemption दे दिया. So पहले buyback income was taxed at company level only. Shareholder received it largely tax free. Now buyback income will be taxed as capital gain tax for all shareholders. Promoter को भी additional buyback tax लगाना अलग सकता है. Corporate promoters effective tax rate में 22%, नॉन कॉर्पोरेट इफेक्टिव 30%. तो जो पहले भी गैप हुआ था कि भाई कंपनी को भी देना पड़ रहा, वो दोनों साइड से आ गया. एंड मैट has been reduced from 15 to 14%, a 1 percentage point relief for companies paying MAT. एग्जिस्टिंग क्रेडिटेबल यूसेज आप 30 मार्च तक कर सकते हो. न्यू रीजन 1 अप्रैल 26 से आ रही है. नाउ 6 पिलर्स ऑफ बजट. बजट में क्या हाईलाइट हुई है, जो सेक्टर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं. पहला सेमीकंडक्टर, सिंस डबल डोरिया है इसमें. फिर डिफेंस सिक्योरिटीज हाईएस्ट एलोकेशन. फार्मा हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस बायोफार्मा शक्ति. इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है बिकॉज कैपेक्स हैज बीन रेज्ड टू 12.2 लाख करोड़. एनर्जी ट्रांजिशंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दिस आर द 6 पिलर्स फॉर बजट 2026. So guys, this was all about budget. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो. Please share with your families and friends. And this was purely for educational point of view. There was no buy sell recommendation from us. So these are all the charts and everything discussed here. Thank you so much.